हमारा आज का टॉपिक क्या है? डिसऑर्डर्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसमें हमने वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेरियस डिसऑर्डर्स। द मेजर डिसऑर्डर इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, उसकी वजह क्या होती है और उसका जो एंड पॉइंट यही होता है, उसका एंड पॉइंट यही है बेटा कि बिकॉज ऑफ द डिसऑर्डर इनसाइड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास जो है ना क्या होता है, हमारे पास जो है वो जो गेमीट्स हैं वो वायबल प्रिपेयर नहीं होते। वायबल का मतलब ये है कि उनकी फर्टिलिटी जो है वो ठीक नहीं होती है, और फर्टिलिटी ठीक ना होने की वजह से तो उसमें ये है कि जाइगोट बनना एंड फर्टिलाइजेशन या कंसेप्शन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में बहुत सारा मसला हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द डिसऑर्डर्स ऑफ द मेल एंड देन द डिसऑर्डर्स ऑफ द फीमेल। ठीक है, इसमें ये है कि कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं विच आर बिकॉज ऑफ हार्मोनल जो है वो प्रॉब्लम्स। ठीक है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स में आपके पास वेरियस काइंड्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो कि राइट डाउन दीज थिंग्स, जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ इंटरफेयर करते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ वो उसको फंक्शनिंग को डिस्टरप्ट करते हैं। ठीक है, उनको उनको हम दे आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ केमिकल्स जो कि फिर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जो है ना वो डिसरप्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो करते हैं। ठीक है, इनके जो मेन जो केमिकल्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ, व्हाट डू दे डू एक्चुअली, दे डिस्टर्ब द हार्मोनल बैलेंसेस ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिकॉज ऑफ व्हिच, ये आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, because of which it leads to many kinds of disorders. It can lead to even different kinds of cancers. ठीक है, तो इसमें यह है कि वो बॉडी को चीट करते हैं, दे स्टार्ट टू बिहेव लाइक हार्मोन्स बट दे आर एक्चुअली नॉट हार्मोन्स, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटामिनेंट्स व्हिच डिसरप्ट द एंडोक्राइन फंक्शनिंग, और इनको हम कहते हैं EDCs, एंडोक्राइन डिसरप्टिंग कंटामिनेंट्स। आपकी बुक में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर जो है इट माइट बी रिटन, बाकी डिटेल जो है वो इतनी ज्यादा आपकी बुक के अंदर जो है वो दी हुई नहीं है। ठीक है, ओके, नाउ द कॉजेज ऑफ द जो है डिसऑर्डर्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डिसऑर्डर्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Disorders of the male reproductive system में the disorder that has been discussed inside your book is mainly the functional disorder. ठीक है, फंक्शनल डिसऑर्डर जो है वो ये होता है कि sperms that are produced are not of the correct strength, or they do not have the correct viability, or the percentage or the proportion of the accessory secretions is not up to the mark, जिसकी वजह से sperms की viability जो है वो उस पे compromise हो जाता है। ठीक है, जैसे कि काउपर्स ग्लैंड जो है उसका फंक्शन ठीक नहीं जा रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड इज नॉट वर्किंग फाइन, वेसिकुलर जो सिस्टम है, वेसिकुलर ट्यूब जो है वो काम नहीं कर रही है, या एनी काइंड ऑफ जो है वो स्पर्म फॉर्मेशन इनसाइड द रेटी टेस्टिस जो है मैचुरेशन में कोई ना कोई काम आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास वेरियस काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स हैं व्हिच कैन बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज में आपके पास फॉर्मेशन के डिसऑर्डर होता है। ठीक है, मैच्योरेशन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में डिसऑर्डर होता है। ये सारी चीजें लिखी हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टेस्टिस की डेवलपमेंट में आफ्टर प्यूबर्टी जो है वो डिसऑर्डर हो सकता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लेयरिंग है एंड जो मदर सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन एंड माइटोसिस के कंट्रोल में डिसऑर्डर हो सकता है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ डिस्ट्रप्टिंग कंटामिनेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। ठीक है, देन some other causes which may be because of male infertility. In your book it has only been discussed कि जो male infertility है कि sperms जो हैं जो produce हो रहे हैं they do not have the capacity to carry out fertilization. इसमें सबसे पहले है azoospermia. A का मतलब without, zoospermia living sperms. ठीक है, the sperms that are produced, they are either absent or they are either dead.
ठीक है, एज़ोस्पर्मिया विदाउट एनी काइंड ऑफ स्पर्म काउंट, बिकॉज इफ द स्पर्म्स आर डेड इट मींस के वहां पर स्पर्म्स नजर ही नहीं आ रहे। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि फॉर्मेशन की जो है वो डिसऑर्डर की वजह से है, ब्लॉक्ड ट्यूब्स हैं इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूब फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, vas deferens में या vas efferentia में there is a blockage somewhere because of which sperms are not shifted forward into the vas deferentia, ठीक है, जिसकी वजह से accessory secretions are being produced लेकिन sperms are not present, and if sperms are present they are dead, ठीक है, sperms जो होंगे वो क्या होंगे, वो डेड होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इट मींस के sperms are absent, that means azoospermia, the sperms will not be present. This is one cause. It can be because of blocked tubes, it can be inherited, ठीक है, inherited का मतलब ये है कि ये पैदाइशी प्रॉब्लम है, congenital, blocked tubes being blocked is due to an inheritance situation जिसमें कि then such a problem जो कि inherited होती है, from birth होती है, that is said to be a congenital disorder. नेक्स्ट आपके पास जो है वो है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब ये है कि स्पर्म प्रेजेंट हैं लेकिन स्पर्म काउंट जो है वो बहुत कम है, ठीक है, नॉर्मल जो स्पर्म काउंट है ऑन द एवरेज इट हैज टू बी 20 मिलियन per ml ऑफ द सीमेन दैट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया का मतलब ये है कि यस स्पर्म्स आर प्रेजेंट लेकिन द काउंट ऑफ स्पर्म्स इज वेरी वेरी लेस, बहुत कम स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जाहिर है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं लेकिन इनकी जो सर्वाइवल है और इनकी जो वायबिलिटी है और फिर इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए जो रेस लगती है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी वजह से जो है ना स्पर्म्स की एनर्जी कम होने की वजह से मेनी ऑफ देम स्टे बिहाइंड। तो ओलिगोस्पर्मिया में ये होता है कि स्पर्म काउंट लो होने की वजह से जो है वो एक डिसऑर्डर बनता है एंड डिफिकल्टी इन फर्टिलाइजेशन जो है दैट प्रॉब्लम कैन बी अराइज। Then we have some kind of deformities in the shape of the sperm. ठीक है, शेप ऑफ द स्पर्म आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि यू हैव टू लर्न द डायग्राम ऑफ द शेप ऑफ द स्पर्म, उसमें उसका जो एक्रोसोम है, उसकी टेल है, उसका नेक है, द साइटोप्लाज्मिक अमाउंट दैट इज प्रेजेंट इनसाइड इट, all these things have to be perfectly in a balance, and if these things are not in the balance and the shape of the sperm is not correct then that also leads to an infertility. थोड़ा सा भी अगर बेटा फर्क होगा तो what is going to happen, जो fertilization है that process is going to be impossible, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपके पास जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा, वो बिल्कुल बिल्कुल क्या होगा, हैम्पर हो जाएगा। फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, autoimmune disorder ये होता है कि your own immune system starts to attack your own body. We have many autoimmune disorders, you might have studied in the first year lecture also. Autoimmune disorder, auto का मतलब self, immune का मतलब your own immune system has started to eat away your own body. Rheumatoid arthritis is also an autoimmune disorder in which your own blood cells they start to attack your own body, ठीक है, तो ये कि स्पर्म काउंट जो है वो क्या होता है, वो इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है जिसमें कि द स्पर्म्स आर अटैक्ड बाय द इम्यून सिस्टम, ठीक है, तो इसमें ये है कि द मेल में द अमाउंट ऑफ स्पर्म्स जो है वो ठीक है, वो कभी ऐसा हो सकता है कि ठीक भी हो लेकिन द स्पर्म्स विल बी अटैक्ड बाय द एंटीबॉडीज बिकॉज योर बॉडी खुदा ना खास्ता it starts to recognize the sperms as an antigen and then the immune system starts to create antibodies according to the sperm and they start to attack the sperms and then they reduce the sperm count और उनमें से जो बेचारे survive भी करेंगे they do not have the strength for fertilization, ठीक है, okay, next causes of the female। अच्छा एक चीज आप ध्यान में रखें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर्स जो है बेटा वो दे आर नॉट सो कॉमन एज कंपेयर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स, लेकिन
खुदा ना खास्ता अगर मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हों तो उनका जो इलाज है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है? और उसमें ये है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकॉज़ इट इज़ अ लार्जर स्ट्रक्चर, और ये है कि इट इज़ अंडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स हैं और बहुत हेवी स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं जो कि इसको वो इम्पैक्ट कर रहे हैं ऑन टॉप ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस वजह से फीमेल के अंदर आपके पास क्या है, फीमेल के अंदर आपके पास जो है वो बहुत सारे, वी हैव मेनी डिसऑर्डर्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड मोस्ट ऑफ देम जो है उनकी रेमेडी होती है और कुछ की जो है वो रेमेडी नहीं होती है, ठीक है? Most common female disorders have been discussed in this presentation, and I will discuss them here in detail also. ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने just note करना है चीजों को। और फीमेल डिसऑर्डर्स को जो लोग स्पेशलाइज करते हैं, जो डॉक्टर्स स्पेशलाइज करते हैं, वो है गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है? गायनेकोलॉजिस्ट जो है ना वो स्पेशलाइज करते हैं अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और ऑब्स्टेट्रिक्स जो हैं वो स्पेशलाइज करते हैं डीलिंग विद द प्रेगनेंसी एंड द गेस्टेशन पीरियड, ठीक है? मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में जो है ना स्पेशलाइज करते हैं, ठीक है? जस्ट टू इन्फॉर्म यू पीपल इन केस कि इंशाल्लाह वक्त आएगा तो आप लोगों ने इंशाल्लाह जब मेडिकल में जाना है तो आपके पास जो है अच्छे ऑप्शंस जो हैं वो होंगे स्पेशलाइजेशन। ओके, नाउ द फर्स्ट कॉज ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू due to which will lead to infertility is first of all the failure to ovulate. Failure to ovulate का मतलब ये है कि the egg is not released. The eggs are present inside the follicle stimulating hormone, but in the follicles, but the eggs will not be released. Now, where is the problem in this case? This problem can be either in the case of the low production of the follicle stimulating hormone, or maybe the follicle stimulating hormone is produced, but luteinizing hormone is not produced, because you know that release of the hormone is actually from the luteinizing hormone. It's the luteinizing hormone that helps the release of the ovum from the जो है follicle. तो luteinizing hormone या follicle stimulating hormone, any of them lacking in the appropriate concentration is going to be a hindrance in the development of the egg, in the development of the follicle, and eventually in the release of the ovum from the follicle. And release of the ovum from the follicle is known as ovulation. ओव्यूलेशन फिर किसी भी वजह से जो है वो नहीं होगी, क्यों? बिकॉज नॉर्मल हार्मोन प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो रहा है। हमने क्या चीज डिस्कस की है? फेलियर टू ओव्यूलेट। नेक्स्ट आपके पास हो सकता है ब्लॉक्ड फिलोपियन ट्यूब्स, blocked fallopian tubes या blocked oviducts. This can be because of some kind of infection. ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो सकती है जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो गई है, कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है जिसकी वजह से जो है वो ब्लॉकेज ऑफ द स्वेलिंग हो गई है एंड ब्लॉकेज ऑफ द ओविडक्ट हो गई है। ये किसी भी टाइम किसी के साथ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन के व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन जो है वो फैल गई है इनसाइड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? ब्लॉक्ड ओविडक्ट्स जो हैं इनको फिर ओपन करने के लिए जो है वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर्स आर कैरिड आउट, लेकिन ये है कि दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम because of which जो है everything is okay, hormonal productions are okay, but the released egg will be damaged via it is passing through the blockage, or it will be blocked behind, it will be locked behind, जिसकी वजह से जो है ना स्पर्म्स आगे आ सकते हैं ना एग जो है वो रिलीज हो सकता है फ्रॉम द ट्यूब। ब्लॉक्ड ओविडक्ट बिकॉज ऑफ डिजीजेस, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस, इलाज इसका है और करवाया जा सकता है। Uterus damage, the shape of the uterus is like an inverted pear. I already told you people, and it is made up of 3 layers, the perimetrium, the myometrium, and the endometrium. Uterus damage actually, because it is under the impact of a large number of hormones,
तो इसमें क्या होता है कि स्पेशली बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन, लिख लीजिए, स्पेशली बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन जो है यूट्रस की बॉडी के अंदर वो प्रोलिफरेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, प्रोलिफरेशन का मतलब ये है कि सेल्स जो हैं वो बहुत सारे बढ़ना शुरू है ना। यूट्रस डैमेज स्टार्ट्स इन दोज वीमेन मोस्टली जो है जो कि 35 एंड 40 से ऊपर होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वीमेन जो है दे हैव दिस प्रॉब्लम एंड दिस इज एक्चुअली अ बेनाइन ग्रोथ। बेनाइन ग्रोथ क्या होती है? नॉन कैंसरस ग्रोथ है which is present inside the uterus. These are actually tumors which grow in the walls of the uterus, and these tumors, they are not dangerous for the life of the woman, but they can be a hindrance in case of fertilization. Fertilization हो जाए, फिर implantation के वक्त fibroid जो है, because it is present inside the uterus in various positions, तो ये थोड़ी सी हिंड्रेंस बना सकता है एंड इट कैन लीड टू मिसकैरेजेस। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस इज अ कैंसरस सिचुएशन in which the endometrium, it starts to grow in different parts of the body. ठीक है, एंडोमेट्रियम जो है उसके जो मटेरियल्स हैं दे पास ऑन टू आउटसाइड द ओवरी आल्सो, और ओवरी के बाहर और यूट्रस के बाहर ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और उसमें ये है कि ये इट कैन बी जो है वो इट कैन बी डेंजरस, इट कैन बी कैंसरस आल्सो, एंडोमेट्रियोसिस, बिकॉज ये फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब्स और फ्रॉम द सर्वाइकल ओपनिंग ये बाहर की तरफ फैल जाता है, और इनर लाइनिंग ऑफ द पेरीमीटरल लाइनिंग के अंदर एंड बॉडी कैविटी के अंदर इट स्टार्ट्स टू ग्रो एंड द हार्मोनल इम्पैक्ट वहां पर भी फैल जाता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर्वाइकल म्यूकस डिफेक्ट। Now, I told you कि ovulation takes place, ये note कर लें, ovulation takes place around day 12, 13, 14, depending upon. तो जब ovulation होती है, when the egg is released, then at that time, the mucus that is present, the environment inside the uterus has to be very, very suitable for the sperms to be able to move through. अगर mucus secretion inside the फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो क्या है, वो थिक है, तो क्या होगा? द स्पर्म्स विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, दे विल बी ब्लॉक्ड एंड दे विल बी किल्ड इनसाइड द जो है अपना यूटेराइन कैविटी में ही रह जाएंगे, क्योंकि वो थिक म्यूकस में से नहीं गुजर सकते। एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन आप हार्मोनल इम्पैक्ट्स पढ़े कि उसमें आप ये देखें ना कि एस्ट्रोजन की वजह से बहुत सारी थिन एंड वाटरी म्यूकस सिक्रीशन होता है, एंड दैट वाटरी म्यूकस सिक्रीशन एक्चुअली it creates an easy way for the sperms to swim forward and bring about the process of fertilization. And if the mucus is thick, it becomes very hard because the sperms will not be able to swim forward and they will not be able to reach the egg on time to carry out the process of fertilization. ठीक हो गई बात? अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा इसमें ट्रीटमेंट क्या है? Various treatments are followed to carry out the infertility problems in male and female. Medicine है in case of infection, surgery है, एंड टेस्ट ट्यूब बेबी का एक ऑप्शन जो है वो बहुत सारी बाहर की कंट्रीज जो हैं उनके अंदर जो है वो कैरी आउट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेस्ट ट्यूब बेबी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होता है, जो लोग करवाते हैं वो कैसे करवाते हैं।